डिसीजन की ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में क्या निर्णय हो सकता है? अगर ऐसा होने लगेगा सिंह साहब, तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार का इनडिस्क्रिमिनेट ऑर्डर पास करने से पहले कि हम सारे कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिव मोड से इनको रिकॉग्निशन देते हैं, इस बात का इल्म होना चाहिए था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, इनमें से वो लोग भी हैं जो केवल परीक्षा के नाम पे फॉर्म भरे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इमेजिन करो, एक पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती होता है 85% समय नर्स उसका ख्याल रखती है। जिस आदमी को नर्सिंग के बारे में ना पता हो, वो आदमी या वो महिला उस पेशेंट का क्या हाल करेगी, ये किसी भी आदमी के लिए समझना मुश्किल काम नहीं है। On the last date of hearing, the Lordship was kind enough to ask me about the IA with respect to the vacating of stay application. Well, that IA is 2072 of 2023, my lord. And this IA was filed on 14th of March 2023. 2072 of 2023, and it was filed on 14th of March. बताइए। जी। This is application under order 39 rule 4 CPC। जब निकालना 39 4 CPC क्या है? CPC का Yes. Yes. Your Lordship may kindly appreciate, Madam. Here one of the main issue which is raised in this writ petition is that by challenging the election P1, P2 and election P8, the issue which is raised is that university is not having any legal competence to grant affiliation retrospectively. Now, this is primarily one of these issues raised in the writ petition. Now, my respectful submission is that approximately 20,000 students, they are ready to take up the examination, and one of the Honorable Court was kind enough to... Before you further proceed on this equitable argument, please tell us, these 20,000 students have taken the entire course for the entire year. You show me the proof of that fact. Yes, yes. Because 20,000 students, if have taken the examination, and there is a CBI report that except these 70 colleges which have got protection of the Supreme Court, the remaining colleges are under the surveillance or vigilance of the CBI, which is undertaking the complete inquiry. Now your own officer who had appeared before this court at the time of
order was passed that CBI inquiry should be held, had expressed his inability that he has no record as regards these colleges related to the infrastructure, the logistics and other amenities required for imparting courses with nursing colleges. This is the state of affairs at the state level by the MP Nursing Council. Now you have sprung a surprise to the public at large that now and the same was the attitude and conduct of your Director Medical Education, who did not have any documents, who did not have anything to explain except saying that I have no knowledge. I don't remember that director's name. He had given total flop show. He appeared totally oblivious even of the litigation. And the same position was with the Indian National what is that? NIC? Indian Nursing Council. Now suddenly you people have started giving retrospective recognition, and while the inquiry is going on, and you say allow these 20,000 persons to take the examination. Now in the teeth of the fact that the CBI inquiry is still going on, how can you give recognition? There is no report of the CBI so far, and that order is not touched by Supreme Court. The Supreme Court only said those 70 colleges where the council has conducted an inquiry, that may be kept out of the purview of the High Court order, but remaining colleges are under the surveillance of the CBI. What would happen to the inquiry which we have ordered and which is going on if we permit you to give recognition and allow these 20,000 students to take the examination? Do you want to scuttle the order passed by this court, or you want to water down the intensity of the order by giving a retrospective recognition to the indiscriminately to all the colleges and saying that now the state government is conducting the wide examination for 20,000 students? Can both the things go together? Yes. My lord, either you seek indulgence of the Honorable Supreme Court, saying that we are not interested for this kind of inquiry. We are more interested that they should be given a retrospective recognition, and a student should be allowed to appear, no matter what studies they have done, where they have studied, and what kind of colleges those are. See, from the same bench, maybe in a different combination, can we still address your grievance once that earlier order is holding the field? I can understand if Supreme Court says no, this order of holding CBI inquiry should be stayed. We will say all right. Then we will enter into the merits of your contentions as regards your power related to giving retrospective recognition, as regards your power to order for examination of 20,000 students without verification of whatever it is there. The first question is, what would happen to that inquiry, which is still going on? yes, your lordship may kindly appreciate, my lord, that inquiry is going on, but here, my lord, so far as the issue which is raised in this writ petition is concerned, my most humble submission is, my lord, we need to look into the statute 26, which deal with the affiliation. So therefore you propose not to answer the first question. I will record it. Because now you are travelling to the merits.
Have you seen that order where under we have ordered for CBI inquiry? Have you seen that order? Madam, I'll just go through with it. Madam, I am bound to answer each and every query made by your lordship, and I am duty Because bound to unless do you so. go through that order जी जी and you say that this order will not come in your way of जी granting recognition to these colleges, it is difficult for us to address about your argument related to recognition. yes. Unless you demonstrate that that inquiry is totally on a different count, it has nothing to do with recognition, we can always go ahead with recognition and inquiry will take its own course, and therefore you kindly hear me on the question whether the state is competent to grant retrospective recognition or not. Yes, Madam, this very. Madam, what I am respectfully submitting, your lordship may kindly appreciate for a while, madam. Madam, here, madam, the recognition has already been granted by the state council, madam. That is there, madam. We are, it's true, madam, that we are bound to face the inquiry if it is going wrong, madam. We need to approve that. You are representing whom? Madam, in fact, madam, I am appealing. In fact, I am appealing for all the three respondents, madam. So therefore, if it is so, then in all fairness, you should not have insisted upon this issue, because you yourself have stated before the court that you have no record, and still you are granting recognition. You please tell me one good reason that if you read that order, your own counsel has said Yes, ma'am. that they do not have any record. जी. And now the same very council, represented by Advocate General, is saying that now we have given the retrospective recognition. Does it lie in the mouth of the State Nursing Council to say so? Because your statement was recorded by the court. That Yes, madam, council has no record. And even the CBI, when went to the office of the your nursing council, some papers were found; those were soaked with water. Mr. Vivek Agrawal was the counsel for the nursing council. He fairly stated, sir, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो कुछ कागज पाए गए हैं जो पानी से भीगे हुए हैं. And this is what was said by the CBI also. अब वही काउंसिल कह रही है कि साहब हमने इन सारे कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन दे दिया है. साहब मेरा एक निवेदन है, अगर आप उचित समझे मैं तो भाई ऐसा है कि हमको मैं उचित समझूं अनुचित समझूं समझाना का आपका काम है. हम तो केवल समझ के आर्डर पास, बट आई मस्ट टेल यू कि ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन की ये बैकग्राउंड है. इस बैकग्राउंड में क्या निर्णय हो सकता है? अगर ऐसा होने लगेगा सिंह साहब, तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, अनमाइंडफुल ऑफ व्हाट हाई कोर्ट हैज सेड. सर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इन ऑल फेयरनेस स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार का इनडिस्क्रिमिनेट ऑर्डर पास करने से पहले कि हम सारे कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिव मोड से इनको रिकॉग्निशन देते हैं, इस बात का इल्म होना चाहिए था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, ये बात मैंने अपनी व्यथा उस वक्त भी बताई थी ऑनरेबल एडवोकेट्स लोगों को कि आज समझिए ये वो बच्चे हैं, इनमें से वो लोग भी हैं जो केवल परीक्षा के नाम पे फॉर्म भरे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कॉलेजेस जिनका अस्तित्व नहीं है. इसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी एक घंटे की क्लास नहीं करी है, इनके जगह कोई और लोग बैठ के परीक्षा देते हैं. अगर ये सारे बच्चों को आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो और ये नर्सिंग स्टाफ में पूरे मध्य प्रदेश में चले गए
इमेजिन करो, एक पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती होता है 85% समय नर्स उसका ख्याल रखती है। जिस आदमी को नर्सिंग के बारे में ना पता हो, वो आदमी या वो महिला उस पेशेंट का क्या हाल करेगी, ये किसी भी आदमी के लिए समझना मुश्किल काम नहीं है। जिसको ना ये आता हो कि कैसे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, कौन सी दवाएं एडमिनिस्टर करते हैं, कब करनी है, डॉक्टर के क्या है। आई मीन नेचुरली इफ यू हैव नॉट डन द कोर्स, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव ऑफ नर्सिंग। और आपने सबको उठा करके इंडिस्क्रिमिनेटली बोल दिया था 20,000 लोगों की परीक्षा लेंगे हम। एक तरफ तो हम लोग परेशान हो रहे हैं कि पब्लिक की हेल्थ जो है सीरियसली जियोपार्डाइज हो रही है, और दूसरी तरफ आप जो है एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सरकार ने निर्णय ले लिया साहब। यानी मुझे भी सरकार के निर्णय पे अफसोस हो रहा है। ना आप इंक्वायरी में पार्टिसिपेट, इंक्वायरी बारे में कुछ समझ में आपको, ना इंक्वायरी को देख रहे हो, ना सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहे हो। हम तो सरकार में बैठे लोगों से आई एम सरप्राइज्ड कि किस टाइप के लोग सरकार चला रहे हैं, जिनको पब्लिक हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। सर मेरा एक निवेदन था, मैं विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहूंगा था कि पब्लिक हेल्थ जो है, हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट गवर्नमेंट इन सेफ हैंड्स सर। अगर इस डिफेंस में है तो इन ऑल फेयरनेस आप मुझे बता दीजिए, ये 20,000 बच्चों को आपने जो कॉलेजेस को रिकॉग्निशन दिया रेट्रोस्पेक्टिव, ये किस तरह से औचित्यपूर्ण है जब इंक्वायरी चल रही है और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके बारे में? आपने किसके आधार पर इनको रिकॉग्निशन दिया? मैं ये निवेदन कर रहा था, वो सीबीआई वाला मामला आज के मामले के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका रिकॉर्ड भी नहीं। इनफैक्ट ये लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट, अगर ये मामला मैं इसे जानना चाहूंगा कि आप अगर आप इस केस को उससे जोड़ना नहीं चाहते हैं तो चलिए, फिर हम आपसे हर इस कॉलेज के बारे में पूछेंगे हम कि हर कॉलेज में मुझे निर्णय बताइए कि आपने क्या आपने इंस्पेक्शन किया और किस आधार पर दिया रिकॉग्निशन आपने, बताइए। You give me complete detail of every college. My lord, they kindly appreciated. My lord, Mr. Counsel, I will just a minute. I will not write on a dotted line. जी। अगर आप बोलते हो कि सीबीआई इंक्वायरी कोई औचित्य नहीं है इस केस का, अगर आपका ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे समझा दीजिए कि आपने इनको रिकॉग्निशन किस आधार पर दिया है। सर मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी से रिलेटेड मामला आज आपके समक्ष विचार करने नहीं है, और मैं आपको असिस्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपकी बात मान गया इस बात को लेके कि आप सीबीआई इंक्वायरी का आज मुद्दा मत उठाइए आप। चलिए, अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये सारे कॉलेजेस को आपने किस आधार पर रिकॉग्निशन दिया, दिखा दीजिए मेरे कागज। भाई, रिकॉग्निशन देने की भी कोई प्रक्रिया है कि नहीं है, कि केवल आपको सरकार की इच्छा है? कोई प्रक्रिया है कि नहीं? जी, उसकी प्रक्रिया है सर। अब मुझे इंडियन वर्किंग काउंसिल के नॉर्म से, तो आप मुझे बता दीजिए ना। नाउ गिव, आई विल गो थ्रू विद ईच एंड एवरी कॉलेज। If your lordship permit me, madam, we will refer the affidavits and attendance sheet and everything, all details which are submitted. You please first, आप ऐसा करिए, आप अभी एक तरफ मुझे ये बताइए साहब, हमारी ये यार्ड स्टिक है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन, और हमें कॉलेज वाइज समझाइए आप। जी, समझाइए आप हमको कि साहब हमारी ये यार्ड स्टिक्स है और हमने इस कॉलेज का ये इंस्पेक्शन किया है एज पर दीज रूल्स, और हमने ये पाया है। आप बता दीजिए सर। वो उसके लिए मैंने एफिडेविट्स फाइल किया, आप उसको कृपा करके देखिएगा। देखिए साहब, ऐसा है, हलफनामे पे ना जाएंगे हम। हमने हलफनामे बहुत देख लिए आपके, और हलफनामों को देखने के बाद ही ऑर्डर पास किया मैंने। अब मैं हलफनामे विश्वास नहीं करूंगा, अब आपके एक्शन पे विश्वास करूंगा कि हलफनामा तो एक फॉर्मेलिटी हो गया आज की तारीख में। आप मेहरबानी करके मुझे इतना दिखा दें
कि साहब ये हमारी यार्डस्टिक्स है और इतने कॉलेज को मैंने दिया है, इस कॉलेज में यही पाया है, आप एक चार्ट बना के दे दो मेरे को और हम उसको वेरीफाई कराएंगे। आई विल आस्क द सीबीआई टू वेरीफाई दिस फैक्ट एंड देन आई विल कंसीडर योर एप्लीकेशन। सर आप so I bow down to the suggestion made by the Honorable Court. We will comply that, we'll submit chart. But what I am respectfully submitting ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप अपनी बहस कर दो, हम ऑर्डर पास कर देंगे, कोई बात नहीं, आप बहस करो, आप चलो। नहीं देखा, मैं चार्ट आपने जैसा निर्देश दिया मैं उसको सबमिट करने के लिए तैयार है। सरकार बहुत जल्दी में है ना, कि ऑर्डर हो गया जल्दी साहब, एक्साइटमेंट तो है ही है थोड़ी सी, तो अब आप सुनाई दो मिनट्स पे हमको क्या ऑर्डर करते हैं। I think your lordship will appreciate my lord that today my lord in fact I appreciate the anxiety of the state, but you should also appreciate our concern. But anyway, आज अगर आप वेकेटिंग स्टे पे बहस करना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिए, बिल पास दीजिए। My lord, we are bound to be attentive for the concern shown by the Honorable Court. We honor the concern which is shown by the Honorable Court. We have कि अब आप क्या, हमने समझे जो हमारे हम लोग के मन में व्यथा बता दी, अब आप बताएं हम लोग कैसे चलें। सर इसमें मेरा निवेदन है, अगर आप रिकॉग्निशन के इशू को भी इसके साथ, तो वो अगर मामला भी इसके साथ टाइम हो जाए साहब, और कोई भी शॉर्ट डेट पे रख दीजिए। आपने जो कहा है और उसमें मुझे एड्रेस करना है, आपने बिल्कुल सच में वो सही प्रश्न किया था कि आपने किस आधार पे। नाउ सर, टू इश्यूज आर देयर बिफोर योर लॉर्डशिप। द एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल हैज ग्रांटेड रिकॉग्निशन, एंड सेकेंडली द यूनिवर्सिटी after following that recognition has granted affiliation as per the provisions of Statute 26. Now, my lord is putting a query that how Nursing Council has granted recognition. What were the norms which were followed by the Nursing Council? No, but for that, my lord, I need to place the chart which is directed by your lordship. My lord, will place the chart that what norms were followed by the State Nursing Council while granting recognition. And so we want record of every college जो आपने इंस्पेक्शन करके आपने दिया है उसको। And so far as the affidavit is concerned, when affidavit is filed, if I file chart along with the affidavit, and if I appear before your lordship, my lord, I'll assure the honorable court that affidavit is proper, and whatever is mentioned in the affidavit, my lord, we will abide by that, and we will follow the contents, my lord, which are supported by the affidavit of our office. See, I tell you, Mr. Advocate General, we always hold you in high esteem because you are the first law officer of the state. So we have no doubt about the position you hold, about the responsibility with which you argue. But the unfortunate part is that your OICs or the councils whom you represent have so far created very bad impression upon us, and that has caused embarrassment to the government also. आज ही मैं बता दूं आपको, आज ही आपके एक मसले में यहाँ पर, despite order of bench headed by Chief Justice,